हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स यूनिट 6 का, जो कि है स्टाफिंग। इसके ऊपर आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, यहाँ तक कि 2015 में भी आ चुका है। तो अंडर व्हिच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड, तो इसका आंसर है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था 2019 में। उसके बाद बात करते हैं द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 देखिए इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट refer to the sources available within the enterprise. First, sometimes in case of vacancy, a candidate with the required qualification and experience is found in the organization itself. First, the important internal source of recruitment are transfers, promotions, present employees, etc. उसके बाद बात करते हैं external sources. All the vacancies in an organization cannot be filled by the internal sources. First, thus an organization has to depend on external sources for filling up the vacancies from candidates outside the organization. First, moreover, it provides wider choice and entrance of new talent in the organization. First of the common external sources of recruitment are advertisement, employment exchange, educational institutes, casual contracts, etc. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि ऑलरेडी 2014 में आ चुका है। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। तो इसका आंसर देखिए, ऑल द वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द इंटरनल सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ दस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज टू फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोज। सबसे पहला देखिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज द न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली गिवन टू सर्च क्वालिफाइड पर्सनस फॉर द वैकेंट जॉब्स। फर्स्ट ऑफ दिस इज a common practice when the vacancy is for higher post or when a large number of vacancies are to be fulfilled. First the requirements of the job are given in the advertisements. First advertisement gives the management a wider range of candidates to choose from. और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ में आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। दूसरा देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हेल्प इन द एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर्स। फर्स्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन्स गेट themselves registered with these exchanges. Government run employment exchanges are regarded as a good source of recruitment for filling unskilled, semi-skilled, skilled and operative posts. First, in addition, several private employees agencies are also active to help the private sector organizations in finding suitable personnel. Number 3 देखिए एजुकेशन institution. So the big organizations make close contact with the universities, vocational institutes, management institutes and other educational institutes for recruitment of various jobs. First, this practice is popularly known as campus recruitment. उसके बाद number 4 देखिए casual callers. Management may appoint persons who casually calls on them for meeting short-term demands. This will avoid following a regular procedure of selection. These reasons are appointed for a short period only. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। इन सम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। हेल्प ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर टेकन व्हेन अनस्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज और एजेंट्स बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब गिवर्स एंड चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज। एंड लास्ट देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विंग ऑफ मैचिंग डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। फर्स्ट ऑफ these agencies invite the biodata and record from various job seekers and send them to suitable clients. These agencies charge fees for their services. तो आज के लिए बस इतना है। आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो सबको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।